गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणकम, सत श्री अकाल और प्रणाम। आज हम अपडेट देंगे आपको मणिपुर के बारे में, जो मेरे विचार हैं, और अग्निपथ के बारे में, क्योंकि अग्निपथ के बारे में आज न्यूज़ निकला है कि ये अग्निपथ there's going to be 50% रिटेंशन। कल ही हमने बात किया था इसी के बारे में। So I'll just go over that कि इसका क्या अर्थ होगा, क्या होगा, I mean, how things will pan out. Right. At the outset, I'd like to welcome Sikandar Kambo, who's listening in from Pakistan, and also Transformer, because his question is going to figure later in the show. Right. Okay, we'll start with the first thing. I got two nice feedback जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि किसी ने बताया है वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब कंटेंट ऑन इंडिया, ये यूएसए से बात कर रहा है। आई लाइक योर कंटेंट अ लॉट एज इट हैज नॉलेज बेस्ड रादर देन रेटोरिक, कीप अप द गुड वर्क। मैं दोबारा सबको आश्वासन देना चाहता हूँ। आई वांट रीअश्योर एवरीवन, आई आई डोंट गो फॉर cheap tricks. I'm at that point of time in life where I have done what I want to do for India. It is my job to educate all of you as to what is ahead. So whatever you get on this is absolute cold facts and based on knowledge. And then, of course, someone else has said, sir, your efforts in educating us about our arch enemy, China. Hope our Bharatiya starts watching your video about China. Unfortunately, they're obsessed with Bikaristan and do not understand that YouTubers are praising Bharat only to get views from our native people so they can make tons of money. I think it's pretty a fair comment, both of them. I don't blame कि कोई और भारत के बारे में यूट्यूब बना रहा है और पैसा कमा रहा है, और अगर हम मूर्ख हैं उनको सुनने के लिए तो अच्छी बात है। पर जहां तक मेरा सवाल है, और जहां तक गना शॉट का सवाल है, यू विल गेट द बेस्ट, और आपको बिल्कुल सही और नपी तुली व्यूज मिलेंगे। और ये जो अग्निवीर के बारे में आज मैं अपडेट देना वाला हूँ, इट विल प्रूव दैट my analysis is generally right. I've not been off the mark. In fact, I've been on the mark on most issues I have analyzed 95% of the time. That's the first thing. Okay, let's move to Manipur. Manipur is in bad shape. Let's be honest, right? Honesty is the best policy. और मैं मणिपुर के बारे में 2 वीडियो कर चुका हूँ, एक जनरल केजे सिंह के साथ और मैंने खुद किया, पर चुप ही रहा काफी देर। पर जो मेरे को ये वीडियो नजर आया, इनफैक्ट इंडियन आर्मी का वीडियो, राइट, ये मैं ऐड दिखाता हूँ। उस इट्स दैट्स व्हाट नहीं Have a नहीं look. नहीं तो वियो Oh, अब नहीं तो वियो लियो नहीं तो वियो कोई चीज देता तो संगे रहना
So this is what the truth is. मैं आज जो मणिपुर का अपडेट दे रहा हूँ ये सिर्फ एक फौजी के आंख से या फौजी के दृष्टिकोण से आपको दे रहा हूँ जो सच्चाई है। अगर लोग आर्म फोर्सेस को अपने काम करने नहीं देते तो कुछ तो होगा ना वहाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये इंडियन आर्मी का ऐसे वीडियो आउट करना ये पहले बार हुआ है, राइट। अभी हम देखते हैं कुछ और घटनाएं जो वहां हुए हैं, राइट। यू सी दिस इज अ रिपोर्ट बाय टेलीग्राफ। Telegraph has said state-sponsored label on violence in Manipur by CPI-backed Federation's fact-finding team. कम्युनिस्ट वालों ने जाके वहां चेक किया और वो बोलते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। कि ये कुछ तो इसमें भी सच्चाई होगा, क्योंकि सीपीआई का वहां प्रेजेंस ही नहीं है मणिपुर के अंदर, उस नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन। पर टेलीग्राफ का एक सीपीआई टीम जाके ये रिपोर्ट करता है। ओके, एक ये रिपोर्ट मेजर अमित बंसल का है। उन्होंने बोला मणिपुर राइट व्हाट कॉज द डिवाइड बिटवीन माइनॉरिटी। जी न्यूज में इन्होंने आर्टिकल लिखा है और अच्छा आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, नबील तुल्य आर्टिकल। तो उस आर्टिकल में क्या बोलते हैं, he says hill tribes have been ignored for long. इसमें there are no two ways about it. Lack of living space and arable land for Metis. ये मैंने भी बोला है, ये भी बोल रहे हैं। पॉलिटिको टेररिस्ट सिंडिकेट, ये पक्का है उधर। मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस ये है कि पॉलिटिशियंस और टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स सब मिले जुले, ड्रग ट्रैफिकर्स भी मिले जुले हैं। और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं एंट्री हिल्स में कमांडर था, वो एक इंसर्जेंट था जिसने एक पॉलिटिशियन को इलेक्शन जीतने में मदद किया, बाद में पकड़ा गया। हिल ट्राइब्स जो है फ्रीक्वेंटली दे ब्लॉक द रोड। और सस्पेक्टेड रोल ऑफ मिलिट्री जनता इन म्यांमार फ्रॉम म्यांमार, वो भी है, ये भी मैंने बताया। और चाइनीज पर्सपेक्टिव भी है। ये उन्होंने अच्छे तरीके से सही सदी हुई नपी तुली आर्टिकल लिखा है। ओके, अब मणिपुर के सीएम रिजाइन करते हैं। रिजाइन करने से पहले कुछ लोग आ जाते हैं और वो फिर रिजिग्नेशन वापस ले लेते हैं, क्योंकि प्रेशर है। ये सब स्टेज मैनेज है, जहां तक मेरा ख्याल में है। और ये रिपोर्ट आता है ट्राइंग टू किल 3 birds with 1 stone। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये शख्स इतना स्ट्रांग हो गया कि बीजेपी के सेंट्रल अधिकारियों ने या सेंट्रल सिस्टम जो इनका अथॉरिटी है, दे कांट सैक हिम। ये क्या कहानी है। और आज तक वहां शांति वापस नहीं आया। और ये सब हो रहा है, इसके बावजूद हमारा होम मिनिस्टर वहां जाके 4 दिन 1 महीने पहले बैठ के सब समझा के आए हैं। इट्स एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल। And if we think that this chief minister is very efficient and he's the only one who can solve the problem, no, he's only sorting out the problem, and he's sorting out the state and India even more, right? Major General AP Singh, Amritpal Singh, he's written a very good article in the Tribune on security implications of Manipur mayhem. मैं उन्हीं लोगों का आपके पास आर्टिकल दिखा रहा हूँ, वही दृष्टिकोण दिखा रहा हूँ जो यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं। इनका कोई इधर का लेना देना नहीं है। These are all balanced articles, and I'm giving you based on what I feel they've written, right, based on my experience. So what does he say? We must read it, right? There are a lot of narratives: ethnic cleansing, narco terror, Christian Hindu conflict. ये सब बकवास है। ये बेसिक चीज है पॉलिटिकल। वहां 3,000 to 5,000 weapons, including mortars, AK rifles, स्नाइपर राइफल्स, ये पुलिस आर्मरी से लूटा गए।
और ये लग रहा है कि ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां के लोग बोल रहे हैं। अभी बहुत ऐसे रिपोर्ट आए हैं। जब एक मेजर जनरल ने ऐसे लिखा और नेशनल डेली में लिखा, इसको तो देखना पड़ेगा हमें। ये लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेती टेरर ग्रुप्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एंड अ सेसेशनिस्ट एजेंडा which is surreptitiously supported by politicians, bureaucrats and a section of police. ये जितने वहां मणिपुर में टेरर ग्रुप्स हैं या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, एक खास करके पीएलए है, इनका ये हिस्ट्री है। एक जमाने में साउथ वेस्ट मणिपुर में इन्होंने उसको लिबरेटेड एरिया कर दिया, करार कर दिया, दे ऐलान कर दिया कि ये लिबरेटेड एरिया। इनके फ्लैग अलग वहां लहराते थे। मेरे को क्यों पता है? मैंने इनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया और उस एरिया को पूरा क्लियर किया। 2 महीने लगे मेरे को जंगलों में इनको ढूंढते हुए। ये भाग गए उस वक्त, अब वापस आ गए। ये दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हम सोचते हैं कि ये पीएलए जो वहां घूम रहा है और ये पॉलिटिशियंस के साथ घूम रहे हैं अभी, ये अच्छी ये है, तो ये हम किसी ख्वाब में हैं। ओके, एक और बात है, द ड्रग बिजनेस is a major source of income for valley-based terror groups. Valley-based terror groups कौन है? Metis. Kuki villagers grow opium and some of them also sell quantities to large drug syndicates run by politicians and valley-based groups. ये देखिए वहां का कहानी पूरा। ये कुकी अगर पॉपी उगाते हैं और ड्रग उगाते हैं, उसको बेचते किसको? ये वैली बेस्ड ग्रुप मेथीस को। ये पूरा चैनल है। वो उगाते हैं, ये बेचते हैं और वो पॉलिटिशियन इसके पीछे है। ओके, दूसरी बात, जब तक आसफा था मणिपुर में, मार्च तक आसफा था और उसके बाद उसको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट निकाल दिया गया। जब तक आसफा था और अमी वहां तैनात था, कोई इंसर्जेंट और टेरर ग्रुप को फ्री हैंड नहीं मिलता था। सब अपना अपना एरिया में ठीक रहते थे। पर क्योंकि निकाल दिया गया, अभी पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल सिस्टम को और टेररिस्ट को, सबको ये सब फ्री हैंड मिल गया इनको और ये दंगा मचा रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि ये कुछ अच्छी चीज हो रहा है, ये बता नहीं अभी क्या है, क्योंकि ये इतना मसला बढ़ गया। ये ये शख्स जो है, कौन है ये? अमेरिकन एम्बेसडर। ये भी हमारे इंटरनल अफेयर्स में दाखिल कर रहा है। ये कहता है मैं भी आके हेल्प करूंगा। कितना शर्मनाक है कि हमने यहां तक इसको बिगाड़ दिया। राइट, आई विल गिव यू एक चीज। मान लो नार्को है, ड्रग बिजनेस है, ये है, वो है, कुकी वर्सेस ये है वगैरह, ठीक है। आजकल जो मेन, जो व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में और इसमें फैल रहा है, क्या फैल रहा है? क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू। भाई ये कुकी और मेथिस का प्रॉब्लम है, वो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। उसको आप कुकी और क्रिश्चियन और हिंदू बना दिया। अगर क्रिश्चियन और हिंदू बन गया, ये भड़क गया ज्यादा, तो ये नागा जितने हैं वहां क्रिश्चियन है, मिजो जितने हैं वो क्रिश्चियन है, ये और फैल जाएगा। तो आपके जितने स्टेट हैं वहां नॉर्थ ईस्ट के, नागालैंड, मिजोरम, कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा असम, ये सब ये लपेट में आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर म्यांमार का प्रॉब्लम यहाँ भी, और चाइना वाले आ जाएंगे। कितना ये मेरे ख्याल में सबको समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है मणिपुर में, ना वो कुकी और मेथी का प्रॉब्लम है, ना वो ड्रग वाला प्रॉब्लम है जो सबको अफवाह फैला जा रहा है, ना, और नाइदर इट इज अ क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू प्रॉब्लम, इट इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। और इसका प्रमाण क्या है? आज ये देखिए, ये भी, ये जो मैं फिल्म दिखाने वाला हूँ, ये व्हाट्सएप में फैल चुका है काफी। आई विल स्टिल शो इट बिकॉज दिस अबाउट अ आर्मी ऑफिसर। हैव अ लुक।
Colonel Sapam, what's in store for their future? That is a big question now. As of now, if the government, the central government as well as the state government, because of complications over here may not be able to do much as of now, but the central government has to come down very heavily. If the children are not behaving well, then the father has to come down to the children and beat them, or whatever he has to do it. I'm really upset why our Prime Minister is still upset. Why he is not spoken a single word. My people are burning and dying. And he is still quiet. Let it be any community. We are all Indians. Why he is keeping quiet? This is a problem which can be sorted out by him. He has to indulge. He is the chief prime minister of this country. He's not concerned about us. I served in the Indian Army and retired. I belong to Assam regiment. My Kuki boys are my ones. In my regiment, Kukis are there, Nagas are there, Maitais are there, everyone is there. From the entire northeast. It pains. Kukis are also very good people. Maitais are also good people. Nagas are also very good. We fought together wherever we went. For the integrity of this country. And now I'm seeing my people burning. My state burning. Dying. Very upset. I don't know what to say. It's very sad. It hurts. ये देखिए, एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर का असली फीलिंग और असली बोल रहा है, ये रो रहा है। वो मेती है, सपम, और वो कुकी, नागा, मेती, सबके बारे में बोल रहा है अच्छे हैं, और मैं भी बोल रहा हूँ अच्छे हैं। ये है एक्चुअल लोगों का वहां का फीलिंग। एंड उसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पीएम कहाँ है? खैर, आई होप समवन सीज दिस, राइट? एंड आई ओनली होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और कल के दिन समथिंग comes true and Manipur stabilizes. Right. We will now talk of the Agnipath scheme. आज Agnipath scheme, it came out that they're going to have only 50% out of service, 50% retention. आप सब लोगों को अगर याद है तो ये पहले क्या था कि 25% only retention and 75% to be sent out after 4 years. वो जो 4 साल included training. Okay. Now, जब ये when this whole thing came, ये जब आया था, I was one of the few people who wrote vehemently against it. I was completely against it because the scheme was not logical. And उस वक्त मैंने ये लिखा था, ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा था। नीचे देखिए, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर, टूर ऑफ ड्यूटी किंडरगार्टन आर्मी। मैंने इस स्कीम के ऊपर इतना आलोचना किया कि मिस्टर चिदम्बरम, प्रताप बानू मेहता, और यहाँ तक कि प्रिंट के जो शेखर गुप्ता, इन्होंने सब मेरा नाम कोट किया, और उनका in their analysis they included it, right? But I didn't only give a problem, I also gave a solution. A little later I said, how do you modify the Agnipath? And I've written about 6-7 articles on this. Okay, now क्या है कि there was no doubt in my mind that this had to be changed. इसमें कोई दो राय नहीं है। और okay, and why did it have to be changed? And for the simple reason is, देखिए, आज का recruitment 45,000 है, हर साल 70,000 to 1 lakh people will come out. इनको क्या करोगे?
राइट? अगर ये चैनलाइज नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, और यही बात हमने कल भी बात किया था। और ये जो कल जो हमने बात किया था, आई विल replay that. It's a 3-minute clip. Have a look at it. Vishwanathan, the government needs to roll back the scheme in our national interest. I put this because this seems to be the general consensus which is coming out from all three of my interactions on this subject. The Aam Aadmi on the street, people who are not with, political or military background, also feel with their common intelligence that the government needs to roll back the scheme in our national interests. It's a almost, I have not had anyone coming on any of my three shows to say, no, this should be continued. At best, it needs modification. And I think the government needs to take note of this, and I leave it at that. Right? No doubt, sir. Okay. Respected sir, is there any provision for rolling back the Agniveer scheme? If the provision exists, then when shall it be implemented? I have no clue. I have absolutely no Okay, I'll talk of this. You see, when ये जब अग्निवीर स्कीम आया था या प्रपोज हो रहा था पिछले साल, मैंने 2-4 बहुत strong articles लिखा, right? And I got quoted. A lot of people said, "Look, you are not even giving a chance for the scheme to be even discussed." पर मेरे दृष्टिकोण से ये agreement scheme was not the best scheme to be introduced. And if it had to be introduced, it needed a lot of modifications. And some of the modifications were that slide which I said, we need to have a lot of exit policies. Okay. इसके 2-3 महीने बाद मैंने I met a senior officer who is involved in this Agniveer scheme. The good news is that that officer told me, one-to-one interaction, कि सर हमने आपने जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं मेरे टेबल पे ऊपर पढ़े हैं, मैं देखता रहता हूँ, और मेरा बातचीत कुछ लोगों से एमओडी में हो गया है, और ये आगे जाके हम बदली करेंगे। ये बात हुआ तकरीबन 6-7 महीने पहले, और ये बदलाव होने वाला है, इसमें मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि जब वो उतना सीनियर ऑफिसर मेरे को बोलता है कि ये होगा कि होगा। पर बात यह है कि अभी आर स्टार्ट गोइंग इनटू द यूनिट वेरी शॉर्टली, राइट? और जो भी मेरे को थोड़ा बहुत they've reached the unit. राइट? तो ये अगले साढ़े तीन साल में कुछ न कुछ तो ये बाहर निकलना शुरू होंगे, और ये प्रॉब्लम हमारे सर पे आ जाएगा। अगर हम अभी से ये बदलाव शुरू करेंगे तो कब करेंगे? तो ये था, और ये कल ही हमने बात किया। ट्रांसफॉर्मर आर्मडा का सवाल था जो मैंने कल जवाब दिया, और आज इसका परिणाम ऑटोमेटिकली ये खबर आ रहा है कि इट्स गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 50%. Will it solve the problem? No, it will not solve the problem completely. Let's be very honest with each other. 50% not being retained is still 35 to 40,000 people who are fully trained and going astray. So your exit policy has to be good, right? Let me reiterate what I said yesterday, right? If they are not channelized, they might join mercenary groups, extremist groups, and they might join private enterprises. We might have a Wagner coming up here. They will become Bahubalis. Lawlessness will increase. All this I have responded, right? But we need to have a proper exit policy for the rest, because these 30-40,000 people who will still come out even after 50% retention, right, will still need to be channelized into society. This 50% retention within the army will help the army quite a bit. I think a lot of problems of which the army was going to face will get resolved. And like I said, I spoke to a lot of senior people 6-7 months back. They said, sir, given time, it will resolve. We are very confident. We are fully aware of what you have spoken, and it's happening. And I'm very sure they will resolve it, because at the end, हमारे जो senior officers हैं और politicians हैं, they are very clear that the nation's security comes first, and that seems to be operating. But at the same time, these 40-50,000 people जो बाहर आ रहे हैं,
राइट? इनको चैनलाइज करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पूरा मैट्रिक्स बनाया था, कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं। यू हैव टू गिव देम एग्जिट्स, बैंक्स, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर, उनको भी अनिवार्य होना चाहिए, इतने लोग लें वो, और इनको बिजनेस शुरू कराइए, स्टार्टअप्स में शामिल कीजिए, ये सब मैंने लिखा हुआ है, ये बार-बार लिखता रहता हूँ। तो ये है मोटे-मोटे तौर पर अग्निवीर का स्कीम का जो है। आज जो हुआ है अच्छी बात है। अभी तक ये खबर यही है कि ये एक्टिव कंसिडरेशन में हो रहा है। बहुत लोगों ने बता दिया 50% रिटेंशन एंड 50% एग्जिट, व्हिच इज गुड। Anything about 25% is good. And I'm sure this will get modified as it goes, which I've said. Okay, now what I want to put across to all of you. देखिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पागल आदमी है, जनरल साहब है, ये पहले दिन से ये ना बोल रहा है। और बहुत लोगों ने बताया है कि आप कैसे जनरल हो कि ये स्कीम शुरू ही नहीं हुआ, आप बोल रहे हो उसको बदली कर दो। जब स्कीम सही नहीं है तो सही नहीं है, सच्चाई है, वही बात है। अगर मणिपुर में सही नहीं हो रहा तो सही नहीं हो रहा है। मेरे को कोई डाउट नहीं है, बताना मेरा दिल में क्या है और मेरे मन में क्या है। जिस दिन से ये अग्निवीर आया था, आई वॉज वेरी क्लियर दैट दिस इज अ रॉन्ग स्कीम एंड आई रिटन अबाउट इट। आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल हैव टेकन नोट एंड दिस थिंग। So it comes to the same thing. You subscribe to this channel, you'll get the actuals, right? I have no thing to say. I will not spruce up. There's no rhetoric. There's no falsehood. बड़ी चढ़ी बात नहीं. There is no flash. Cold, plain, fact-based, knowledge-based analysis is what you'll get from Ghana Short. On that, that's my promise. Okay. So please tell everyone who's watching this channel to subscribe to it. All your friends also can subscribe, because then you'll get a balanced view of where India is going. And I'm not looking at India today, I'm looking at how India is going to grow as a power, and India will rise. आप मेरे बात ले लीजिए। 3 साल पहले जो भी मैंने चाइना के बारे में सही बोला था, वो सही निकल रहा है। अग्निवीर के बारे में बोल रहा है, वही सही निकल रहा है। आगे भी जो भी मैं बोलूंगा तकरीबन सही निकलेगा, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं, राइट? ऐसे न्यूज़पेपर बाजी नहीं करता हूं मैं। ओके, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस नाउ, राइट? Sikandar has joined us from Pakistan. Good evening, Sikandar. How are you? All fine? Right. Could you make a special podcast on Russia-Ukraine war, if possible, cover Air Force aspects also? Look, that war is going into something which is not very great, to be very honest. It is dying down into a long-standing war. जितना भी military lessons उस war से हमने लेना था, ले लिया. You know, yesterday also I said, day before also I said this to General Raj Shukla. Neither neither Russia nor Ukraine or USA are in a position to win this war. Neither can they lose this war. ये चलता रहेगा। 8 साल से ये चल रहा है, किसी और तरीके से ये अगले 2-3 साल चलता रहेगा, right? Sir, US wants to create naval logistics hub in China. Can we consider this as a military base in India? If so, then why India does not reject this? देखिए, ये Sunny, this is not a logistics base in the true sense. Okay, we have a logistics agreement with them, Lemova. We have a Comcasa agreement with them and Beka agreement with them. So whatever जो हमें as per those agreements, logistics exchange memorandum of understanding, वो तो हमारा साथ उनके साथ करना है. We have to give them those. Whereas, what is US trying to do? I know this because the L&T shipyard in Kattupalli in Chennai, those people I interact with, they have told me this. In fact, I keep advising them also. That shipyard is being given contracts by US Navy. That's open shipyard. Okay, anyone, it can take contracts from anyone. So US Navy is coming and giving them contracts for fitment of their ships. They have already done 2-3 ships of the US
नॉट द मेन लाइन शिप्स, वो सपोर्ट शिप्स वगैरह के बारे में इन्होंने 1 साल से ये कर रहे हैं. Now the US Navy is happy with it and they are coming and giving them more orders. That is how it's becoming a logistics hub. Okay, so you will see this happening. Other shipyards also taking this, and since now we have a strategic partnership with them, they are also more confident. वो भी काफी confident हैं कि आके यहाँ ship repairs करें on commercial basis. जिस तरीके से हम उनसे गन ले रहे हैं, प्रेडेटर ले रहे हैं ऑन कमर्शियल बेसिस, वो फ्री में तो नहीं दे रहा कोई हमें, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, पैसे से दे रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारा भी उनको देना है, वो ये है. तो ये लॉजिस्टिक्स हब ऐसे फालतू का नहीं है. इट इज ऑल बेस्ड ऑन मनी. इट इज म्यूचुअल. यही मैं बार बार बताता रहता हूं, जो भी यूएसए के साथ होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. इट विल इंक्रीज म्यूचुअल ट्रस्ट. It's all cash and carry transactions. There's nothing free in this. Okay. Jayan sir saw an episode on Deaf Talks by General Dushyant explaining the drug problem as Taliban has reduced drugs in Afghanistan. And this, yes, this will happen. ये इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान में जो हो रहा है, उन्होंने 1-2 साल पहले शुरू किया. अब वहां कट हो गया तो यहाँ बढ़ेगा, पर अभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यू हैव टू हैव क्रॉप्स. पॉपी का क्रॉप is not a round the year crop. It's a 3-month crop. It comes only in winter season. Okay, so you'll have to wait. This will start. ये बढ़ेगा. अगर ये मणिपुर में हम ऐसे ही चलता रहेगा तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगा. तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये तीनों स्टेट अफेक्ट हो जाएंगे कुछ हद तक. अरुणाचल भी, क्योंकि ये पूरा इलाके में पॉपी बढ़ सकता है. तो अगर हमारा जो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की काम है, अगर हम इसको सही तरीके से संभाल नहीं सकते, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो टेररिस्ट, म्यांमार लोग, चाइना लोग, ड्रग कार्टेल सब एक्सप्लॉइट करेंगे. राइट. Why is India not carrying out airstrikes and special operations in Myanmar? Because of lots of these militants have hideouts. ऐसे नहीं कर सकते हो आप राहुल कि आप एयर स्ट्राइक कर दो. एयर स्ट्राइक करने से वॉर हो जाता है, एंड यू कैन नॉट यूज एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर ओन पीपल. दिस आर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज. ये मणिपुर वगैरह में ये जो भी प्रॉब्लम अभी हो रहा है, इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू. इट्स अ पॉलिटिकल इशू. अगर हम ये सब चीज आपके और हमारे हाथ में है. अगर ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज को आप खड़ा करोगे, आर्मी के पास कोई इसका ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल इशू खड़ा कर दो, मसला खड़ा कर दो, समस्या खड़ा कर दो और उसके ऊपर एयरफोर्स लगाइए. आप सही तरीके से चुनो आदमियों को. यू कैनॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड से प्लीज सॉल्व इट फॉर मी. दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट इट. या व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द मणिपुर इशू? मैं बताता हूँ. सबसे पहले कुकी, नागा और मेती ग्रुप्स को बात करने की जरूरत है. ये तीनों लीडर्स को बिठाओ और बात करो. आर्मी को जितना आपने डिप्लॉय कर दिया, वो उनसे और होगा नहीं. तो इन सबको बिठाइए, बात कीजिए. सबसे पहले स्टॉप द वायलेंस. गेट एवरीवन बैक टू देयर विलेजेस. 1. Second, definitely central government ने they should take a call to remove this chief minister. इसमें मेरे को दो राय नहीं, क्योंकि ही इज अ फेलियर. अभी 3 महीने हो गया और ये नाटक कर रहा है कि मैं रिजिग्नेशन दूंगा, पर लोकल प्रेशर है, ये वगैरह वगैरह है. सबको पता है क्या कहानी वहां एक्चुअलिटी. अभी तो कोई छुपा नहीं है. नैरेटिव छोड़ दीजिए, नैरेटिव में बंद करो. राइट. कूल डाउन टेम्पर्स. अगर ये 2 चीज करेंगे और धीरे धीरे गेट टू असली डेवलपमेंट, बिकॉज इसके साथ साथ ये ड्रग प्रॉब्लम वहां बढ़ने वाला है. जब तक आप इनको चैनलाइज नहीं करोगे इनटू थिंग्स वेयर दीज मणिपुरीज आर गुड. व्हाट आर दे गुड एट?
They're good at sports. Use them. Use them for those things where they can be utilized for national interest. और बहुत है वहाँ. Education, vocational training. वहां से लोग बाहर जाते हैं नौकरी के लिए. मैं यहाँ देखता हूँ चेन्नई में चारों तरफ बहुत लोग हैं. मणिपुर से आते हैं, चूराचांदपुर से ही आते हैं, कुकी भी आते हैं, मैती भी आते हैं और नागा भी आते हैं काम करने के लिए. उनके पास कोई दे डोंट हैव स्पेशल स्किल्स. यहाँ आके टेक स्किल्स, स्टार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग ताकि वहां लोग काम कर सके और वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद बाहर स्टेट में आके काम कर सके, रोजी रोटी कमा सकते हैं, घर में बेच सकते हैं एंड दे विल गेट ऑफ दिस टेररिज्म एंड गेट ऑफ ड्रग्स. शांति स्थापित करने के लिए बहुत तरीके हैं. अशांति स्थापित करने के लिए पॉलिटिशियंस ले आइए, ऐसे जिस तरीके से हमने चुन रखा है. तो आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ थिंग्स. ये दो तीन ही है, अगर मैं बैठूं तो बहुत है. ओके, राइट. How competent is mercenary army over regular army? Do you think चीन? No. देखिए, ये भी गलत फहमी है वमन. वहां जिस तरीके से हमारे पास टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स हैं, उस साइड भी वही है, यही लोग हैं वहां. China will employ. China has already employed mercenaries in Africa. China will not employ mercenaries within China क्योंकि उनको डर है कि अगर प्रिगोजिन जैसा कोई उल्टा पुल्टा हो गया और तिब्बत में उनको डिप्लॉय कर दिया, एक दिन वो भाग गए तो ये लुढ़क जाएंगे. यहाँ नहीं करेंगे, वो बाहर करेंगे. तो चाइना से हमारा मर्सनरी आर्मी का प्रॉब्लम नहीं है. कि चाइना के जहां तक है, दे माइट सबवर्ट टिबेटन्स, दे माइट सबवर्ट नेपालीज. इसीलिए जो कल का जो हमने वीडियो जारी किया, वैगनर ग्रुप, अग्निवीर, अग्निपथ, नेपाल, गोरखास वगैरह के बारे में इम्पोर्टेंट है. वो चाइना के साथ the problem is completely different as far as mercenaries are concerned. China has already employed mercenaries in Africa because their own people cannot go and guard their interests there. Okay, it's a big money, and the playgrounds are Middle East. Again, China will not enter Middle East like Russia has entered. China will only take care of its economic interests. और मेरे को इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग टू मी, आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर ये पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करना शुरू करें. तो पाकिस्तानी इस चीज में माहिर है. ये मिडिल ईस्ट में जाके शुरू करेंगे और ये चाइना वालों को मदद करेंगे. वैसे भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, अगर चाइना वाला ये पैसा देगा तो करेगा ये. और वैसे भी पाकिस्तान का हिस्ट्री है, वो अपना मिलिट्री सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं. तो दैट्स द थिंग. यहाँ हमारे साथ बॉर्डर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, व्हाट इज योर व्यू ऑन गवर्नमेंट रिस्पांस टू द गवर्नमेंट का रिस्पांस ठीक नहीं है अभी तक. इट इज बिलो पार. आर्मी कैन नॉट होल्ड दिस सिचुएशन फॉर लॉन्ग, स्पेशली क्योंकि आर्मी इज ऑफ द ग्रिड. पहले जमाने में आर्मी वाज ऑन द सीआई ग्रिड. हम जब सीआई ग्रिड में थे, हम पेट्रोलिंग करते थे, लोगों से बात करते थे, चारों. इनफैक्ट मैं अपना आई विल गिव यू माय ओन एक्सपीरियंस. जिस जगह मैं था, एनसी हिल्स, जस्ट नेबर्स, नॉर्थ कचार हिल्स, जस्ट नेक्स्ट टू मणिपुर. उस इलाके में मेरे को lot of people, I had deployed in a grid all over the thing, and some part of Manipur also had deployed. हम लोग विलेजेस से बात करते थे, कुकी ग्रुप से बात करते थे, नागा ग्रुप से बात करते थे, उल्फा वालों से बात करते थे, दिमासा से बात करते थे, कार्बी वालों से बात करते थे, मुसलमानों से बात करते थे, क्योंकि वहां कचार में काफी मुसलमान है. हैलाकंडी, करीमगंज, ये सब मुस्लिम, सब वर्गों से हम बात करते थे और इनका नस पकड़ते थे कि ये क्या हो रहा है, और उनको मदद करते थे ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ. तकरीबन हर आदमी से हमारा मेल मिलाप था. मैं आपको एक I'll give you something which is fantastic about that place. Once my wife and daughter came to visit me in NC Hills.
right? One insurgent overground guy leader came and he said, "Sir, अगला 1 महीना कोई ऑपरेशन नहीं होगा." मैंने कहा क्यों? कहता सर आपका वाइफ और डॉटर आए हैं, तो हम थोड़ी ना आपको इसमें तंग करेंगे। हमने सब ग्रुप तय कर लिया कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इन दोनों को हर गांव में ले आइए, हम इनको आदर करना चाहते हैं। और वो हुआ। तरीका है वहां का तौर तरीका ही अलग है। You have to understand that mentality, right? So the point what is this is you need to do some things differently and they respond. आज तक अच्छा ये भी सोचिए मैं क्यों इतना क्लियर बात कर रहा हूँ आपसे मणिपुर के बारे में। वो इसीलिए है कि कुछ लोग मेरे को अभी भी सोशल मीडिया के थ्रू संपर्क रहते हैं और बोलते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, राइट? Okay, we'll take some points which have come. Okay, right. Sticker points. I'll come back to you basically. Eshan says, so what is your opinion on the recent statement that Dalai Lama wanting to rejoin China? I can copy paste it in chat if you want. No, Eshan, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप दलाई लामा का मिडिल पाथ देखते हो, what he has said in Strasbourg, he has always said that he is part of China, but he needs autonomy. देखिए, जब तक we didn't recognize China, Tibet as part of China, the Dalai Lama had one tune. When we recognized Tibet as part of China in 2003, when they recognized Sikkim as part of India, okay, so Dalai Lama had to say, okay, we will go this way, and the middle path, he has very clearly enunciated it. और ये middle path ही जो Central Tibetan Authority है ये भी बोलते हैं। So he doesn't want to join China ऐसे ही. There is a middle path which the Chinese don't want. क्यों? उसमें he is asked autonomy. The Chinese don't want that. The Chinese want to hardpo them. So there's nothing offensive about what he is saying. So we have to be clear. Okay. Arnav, do you think China will invade before election? No, I don't think it will invade. छुटपुट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और ये भी बात है कि अगर चाइना ने इन्वेड कर दिया और यहाँ नेशनलिस्ट फीलिंग हो गया तो उनको प्रॉब्लम होगा। So what are your opinions on the news Dhanush howitzer deployed in eastern Ladakh, which was made based on the TOT from Bofors howitzer? How does it improve upon the Bofors? Okay, Eshan, next week I'll definitely do this program on artillery. I virtually shepherded this gun from 2010 to 2016 when I retired. 6 years I was involved. I brought it to the stage of trials and getting inducted into the service. Thereafter, the other formalities completed. This is one of the best things which has happened in Indian artillery and Indian Army. This gun was made on, I will hold your question, get back to me when I do the thing on artillery. I'll explain to you in detail because ye mahol nahi hai to explain this. Why? And we have our answer. And this actually proves the fact that we have complete technology for making guns. Okay. Okay, Islam is the biggest threat to China. China is second, and US deep state is the third threat. Well, that's your choice, Frank. I'll not go with these things because the way you have put it. So leave it at that. I'm going from below. So how can a civilian help in fighting the internal war? You can do a hell of a lot. I always say जहां भी आप हो आप आपका वातावरण सही रखिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. Okay. So China is stopping exports of germanium and gallium. How will this impact us? And are they trying to stop semiconductor investments in India? Well, all this game will go on. So let's not worry. ये तो एक news report आया. Actuality क्या है देखते हैं. It will come out in due course of time. So don't get worried about it. Okay.
Russia used different technology to annihilate Leopard and Abraham tanks. Does this mean modernized T-90 would have failed again? Look, these are all theoretical questions. There's no question of a T-90 facing off against Abraham or Leopard tanks in our context. We are going to face those, Chinese tanks in high altitude, which are tin cans actually. They are only tin cans on, mobile tin cans with a gun. So leave it at that. Let's not get into these things which don't have any value. Okay, how high is the possibility of true front war? In that case, how prepared is India? Will India be required to take external help, and which countries would help India in such a situation? Kaustav, at this point of time, everyone talks of the possibility of two front war, पर मैं नहीं मानता हूँ. We should be prepared for a two front war. Yes. My view is the second front will open if the first front is not doing well. अगर हम first front में लटक रहे हैं against China और वहाँ अगर we are in a problem, then Pakistan will open the second front to take advantage of us. That will be the case. But in my opinion, in the next 2 years, there will be no war. China can't afford a war at this point of time. If China gets into a war with us, it will lose Taiwan completely. And what's happening, in fact, एक दिन मैं वहाँ का dynamics बताऊंगा. How Japan, South Korea, Philippines, Taiwan, Vietnam, Indonesia, and Malaysia are militarizing. China has its hands full there. For them to open up another front here is going to be very difficult. Okay. What does the history say? When we went into Bangladesh, the Pakistanis expected that China will put pressure on us. उन्होंने नहीं किया. कारगिल के टाइम पे भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि चाइना कुछ करेगा. उन्होंने कुछ नहीं किया. जब चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में एक फ्रंट खोला, हम सब सोच रहे थे कि ये सेकंड फ्रंट पाकिस्तान करेगा. पर उस वक्त एक कोर कमांडर ने एक व्याख्या लिखा कि हम क्यों करें जब वो हम उनका पाकिस्तान का, या हम क्यों करें जब चाइना ने हमें मदद नहीं किया. So they were against it. They said there are no free lunches. Why should we give China a free lunch? क्यों हम जाके अभी इंडिया के साथ मुठभेड़ करें? चाहे जीते या हारे हमें नुकसान होगा, क्योंकि उसी वक्त 2020, if you remember, Pakistan economy was in a bad shape and they were not prepared to fight a war. So you have to take everything into account. India must be prepared for a two front war. The possibility is a different story. और ये हालत कल बदल भी सकता है. So we should be prepared for the worst case situation. I think we are. Okay, Rishikaran Devjyoti, sir, using air power and mountains can be challenging due to certain weathers. This increases the importance of artillery. How can we employ artillery effectively? Again, I will answer this question when I do this thing on artillery. I'll do it next week. A lot of people have been asking. It's a fair one. I must do it. Right, JBJP. General sir, government seems to be listening to you on Agnipath. If a change has taken place, please explain what is the Army strength pre-COVID and what is it, and will you trust your numbers? देखिए, मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, वो वीडियो कल ही मैंने पब्लिकली बताया, पहले भी लिखा और ये भी बताया. People have been consulting me, not fully, but they have taken note of what I have said. I'm happy कि जो भी मैंने बोला उन्होंने this thing, and it's only logical that they took this thing. But जहां तक आर्मी का स्ट्रेंथ है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि आर्मी का स्ट्रेंथ पोस्ट कोविड ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर अभी शुरू हुए आने की. इट विल टेक अ कपल ऑफ इयर्स फॉर दिस टू हैपन. जो 2 साल में हो गया है, इमिडिएटली आप पूरा नहीं कर सकते हो. वी डोंट हैव द ट्रेनिंग कैपेसिटीज. और ये अग्निवीर का ये जो मॉडल्ड अप स्कीम है, ये बीच में आ गया. इट हैज स्टॉप्ड मेनी थिंग्स. बट वन गुड थिंग व्हिच हैज कम आउट ऑफ अग्निवीर स्कीम इज ये ट्रेनिंग. ये बात मैंने काफी लोगों से किया है जो एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहे हैं. वो कहते हैं कि सर हमारा जो ट्रेनिंग कंटेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं है, हमने टाइम कंप्रेस कर दिया. टाइम कंप्रेस करने के इनके तरीके थे, कुछ लीव काट दिया, कुछ सैटरडेज को काम कर रहे हैं, कुछ वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया.
तो जो पहले वो 9-10 महीने में कर रहे थे, वो आज 6-7 महीने में करके इनको आउट कर रहे हैं अग्निवीर्स को. So they are quite okay. So now with this 50% increment, everything it will settle. The good thing is now Agniveers are coming out faster, so they'll start making up faster also. So let us see. This is not the last word in on this Agnipath scheme. There'll be more changes hopefully. Uh, I have in his SEO address, Z laid emphasis on color revolution and why they must be prevented. What is he so afraid of? I'm sure the insane level of surveillance in China would prevent any relate. Uh, Shrutik, I agree with you, but he's worried. ये पहली बार नहीं है, पहले मर्तबा नहीं है जब उसने कलर रेवोल्यूशन के बारे में बोला. ये इसने पिछले एससीओ समिट में जो कजाकिस्तान में हुआ उस वक्त भी बोला था. और उसके बाद अगर आपको याद है, ये जब वापस गया तो ये अफवाह फैला कि वहां कोई कू हो गया वगैरह वगैरह वगैरह. तो इज ऑलवेज वरीड. क्यों? पीपल इन चाइना आर नॉट हैप्पी एवर सिंस कोविड हैज टेकन प्लेस. इसीलिए अगर आपको याद है तो क्रिस्टीना चेन फ्रॉम ताइपाई, शी गेव अ टॉक कि वहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं, व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन हुआ है, ओल्ड पीपल आर नॉट हैप्पी. आजकल मैंने आज ही रिकॉर्ड किया और पीक इनटू एवरीडे चाइना के चाइना का अंदरूनी हालत क्या है. जॉब्स नहीं है, ना ओवर 35 वालों को जॉब्स है, ना माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब्स मिल रहे हैं, ना नए ग्रेजुएट को जॉब मिल रहे हैं. तो उस हालत में there will be unhappiness in China. So let's see how it goes, right? And that is why Xi is worried. And that is why he's spending more on internal security. Exports are down, GDP is down. Just wait, day after tomorrow, I'm releasing that video. It's a small video, but it explains the crux of the matter. And this is the 4th month when it is happening. Okay. Abhijit Iyer Mitra had said on JD that Agnipath plan is to reduce our army size from 12 to 6 lakhs on defense stocks. A general called him armchair expert on Rafael. Your take on that general is right. देखिए, कुछ हद तक इनका पॉलिटिकल लीनिंग भी ऐसा है और इनको आंकड़े नहीं पता, इनको एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है. ये पत्रकार जितने भी हैं, ये अभिजीत अय्यर मित्रा के अगेंस्ट मेरा कोई ये नहीं है, इनको उतना ही पता है जितना उनको पढ़ाया जाता है. इनको थोड़ा पढ़ते हैं, प्रेस रिलीज से होते हैं और इनके अगर जिस तरीके से वो अपना ही टेक्स हिज ओन कंक्लूजन्स. ओके, एक्चुअली आप जो बोल रहे हो इट रीइंफोर्सेस माय पॉइंट. आप सबको कृपया आप बताइए सब दोस्तों को कि प्लीज अगर आपको सच्चाई जानना चाहते हो और एक्चुअलिटी जानना चाहते हो, यू वांट रियलिस्टिक पिक्चर कि जो भी हो रहा है हमारे देश के अंदर, खास करके सिक्योरिटी चीजों के ऊपर, खास करके जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर. इफ यू वांट अ ट्रू पिक्चर, कम टू गणेश शॉट. एक तो हमारा आदत झूठ बोलने का है ही नहीं. हमें कोई आपसे यू नो आई डोंट नीड एनी बड़ा चढ़ा के बोलने का आदत है ही नहीं. बिकॉज आदत से मजबूर हैं हम. और जो भी हमारे साथ आ रहे हैं यहाँ, उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ who I know will speak the right thing and analysis based on analysis and facts and knowledge. And all those people who come here are those people who have served this nation, and we are here to serve you. Tell your friends to join in. You'll get the right thing at least. And I mean, if you want entertainment, go to all the other channels. I have no problem. You want a different view, go to other channels. I have no problem. I mean, this is democracy, and I'm not forcing you, but I'm only telling you what. And I started this channel, Gana Short, not to make money, not for getting, name. Oh, मेरे पास already है.
My articles were being seen in 80 countries, right? I've walked up to the president thrice to get medals. उससे ज़्यादा नहीं किसी, no one can get. Very few have got. I'm here to tell my countrymen that India is rising and why it's rising. And it is not because of any political party or any neta. It is because of you and all of us. It is us who will make India rise. And I will do a show on this as to why I'm talking the way I'm talking. Lohit Nath. Sir, with due respect, who is to blame for this Manipur problem? मैंने बता दिया आपको, politicians. It was not Manipuri tribes. Okay? Manipuri tribes had become quiet till about 3 months back. So don't go under mistaken impressions from here. I have lived with the tribes. Lohit Nath, take it from me. I have first interaction with any tribe in Northeast was in 1980. And 1980 is 43 years back. I don't know how old you are. That's the experience I have with Northeast tribes. So don't blame them. It's the politicians. Right? What to make of ambassadors help? Look, he'll fish in troubled waters. कोई भी बाहर का आदमी अगर आप उसको मौका देंगे तो he'll fish in troubled waters. And this fellow has a history of doing so. And what influence US has? Influence, direct influence नहीं है. It's all through the church. So there will be problems. अगर आप, I will not blame this ambassador. वो कुछ भी बोल सकता है. आपने उसको मौका दिया तो बोलेगा. आपने मौका क्यों दिया? Yeah, transformer. Yeah, you asked this question, and see, yesterday I answered. Hasn't it come out right? I hope that the Agniveer scheme becomes better and better in upcoming days. A major part of the credit goes to the guidance. Yeah, it's not me alone. Many, in fact, I will say there were 2, 3 others who stood by what I spoke. One was General Vinod Bhatia, who was the ex-DGMO. At one point of time, only he and I were standing up and speaking against the scheme. Others all had fallen in line. And of course, General Shokin Chauhan. Right. Okay. In my view, if Agniveer getting job reservations, do they also have to qualify the competitive exams or not? Yeah. Even now at this point of time, when despite the fact that they have reservations, they have to go through the qualification exams for the reservations. हाँ, इनका रिजर्वेशन में ये जो कंपटीशन होता है उसमें 1-2 पेपर ये कम हो जाते हैं और इनका विद इन द रिजर्व्ड कोटा इनको मिल जाता है. ये प्रॉब्लम ये है कि लोग अप्लाई नहीं करते. अप्लाई क्यों नहीं करते? वो द सिस्टम इज नॉट देयर. लोगों को पता नहीं होता. ये ऐसे चोरी छुपी एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं और वो ज्यादा आता नहीं है. So people don't know. अगर इसमें if all states and if the center and if the armed forces make a concerted effort, ये सही होगा. आज के दिन 90% of the quota for ex-servicemen in state departments, state and central departments, banks, PSUs go, they go vacant. They are not taken up. They are not filled by ex-servicemen. They go into the general quota. क्यों? Because the ex-servicemen are not channeled there. ऐसी बात नहीं कि वही गलत है. गवर्नमेंट भी गलत है, आर्म फोर्सेस भी गलत है, लोग भी गलत हैं. मेरा होप ये है कि इसके जरिए the whole thing comes into some organized method so that people qualify for these exams. It's very simple, actually. Tushar.
Can you comment on how Indian military can achieve economy of scales with fewer weapon systems and rather than using too many platforms? Ask only 2043, then SIG. Okay, AK, let's look at it. जैसे हमने ये ऑप्टिमाइजेशन किया है थ्रू प्रेडेटर्स, हेरॉन, सर्चर्स, वी गॉट सर्चर्स. ये जो सर्चर्स है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में इस्तेमाल होता है. हेरॉन्स भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में इस्तेमाल होता है. अभी ये प्रेडेटर्स आए हैं, ये भी धीरे धीरे हर एक जगह होगा. उसी तरीके से जब ये राइफल्स आएंगे, राइफल सिर्फ आर्मी में नहीं आएंगे तो बाकी जगह में भी आएंगे. जो जो सिग्स हैं ये सिर्फ अभी इट वाज लिमिटेड क्वांटिटी. दैट लिमिटेड क्वांटिटी इज मेंट फॉर द आर्मी एंड मोर फॉर इन्फेंट्री. The AKs, when they come into full force, they will be given to everyone. So there will be optimization of systems, and there will be fewer weapon systems, and there will be not be too many platforms. Okay. Partha, right? Is the Navy Coast Guard a government that is blocking water sports in South Mumbai? Like, I don't think so. I'm not too familiar with the actual thing. ये छोटी चीज है. What is the local dynamics? I really don't know. I cannot comment. Okay, GK पहली बार पूछ रहा है. Question. I've not heard him ask a question before, right? Your comment on illegal migration in Northeast and illegal Bangladeshis is demographic transition is a cause of concern and national security threat. Yes, it is. Again, it is our responsibility to ensure that this illegal migration does not take place. If you are involved in these riots, if you are involved in a law order situation, if you are involved, then how can you monitor the border? देखिए, अगर आप अंदरूनी इलाके में देख रहे हो, you're internalized your own situation, how can you look outside? It's foolish. Whatever is happening is foolish there. That's all. Right. Okay. Can we upgrade our training of all forces for integrated theater command? Definitely we can, and we are. That process is started. Don't worry. As it is, we are doing higher command courses where Army, Navy, and Air Force officers they do it together. It's not new. Yet, when I did the higher command course, also there were Army and Naval officers. Now it's expanded, so we are okay. Yeah, Vishwanathan, you asked me this question. So, extended tenure of 6 to 8 years with concurrent technical training with a degree useful in civilian domain and absorption into state. Look, yeah, Vishwanathan, it is not a one size fits all kind of a solution. There are many solutions, there are many methods. 50% is what they've said. I've also spoken of a graded exit. I hope that comes through. And then, of course, the government has to चैनलाइज. वो चैनलाइजेशन के लिए मैंने बताया बहुत तरीके हैं. वो मैट्रिक्स में जो आपको दिखाया, दोबारा मैं दिखाता हूं. या दिस इज द मैट्रिक्स. अगर दोबारा दिखाना चाहता हूं, देखिए एग्जिट आइडियाज बहुत हैं. जो आज के वैकेंसीज हैं उसको भरिए. सीएपीएफ में ज्यादा वैकेंसी दीजिए. कोटा इन सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज, banks, PSUs, corporate hiring, education. If you give more education is a very good way of ensuring that people are upskilled and they go out better, right? How about businesses? Milk, vegetable booths वगैरह दे सकते हैं हम, right? Transport, fertilizer agencies, cooperatives, बहुत हैं, ठीक है ना? बहुत तरीके हैं how to make this happen. ओके, ईएसएम स्टेटस दीजिए इनको. ईएसएम ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कीजिए फॉर द आर्म फोर्सेस. स्टार्टअप इकोलॉजी शुरू कीजिए. सर बहुत है, तो इसमें दीज आर ओनली सम. इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस, इट लॉट कैन बी डन. ओके, there are many good percentage of Agniveers who are not interested in continuing the army. They may be, but जहां तक मेरे एक्सपीरियंस और ये है, बहुत लोग नहीं है. Everyone wants to, continue, and it's a fair thing, and it's good that we should keep them under. Right. Okay.
Why India can't have defense minister who's from the defense only so that he can talk and from all policy? Yeah, I agree with you, Mohit. This is something very funny. जब हमारा external affairs ministers can be from that cadre, it's time we had a defense minister from who from the forces who's dealt with the forces, right? It makes a big difference. There's no doubt about it. Russia ended the discount on oil. What is the message? Well, we'll have to take it. We'll see how it is going. Right? If they ended, then we'll go somewhere else. We should do what it was good in our interest. Right? Then they'll have problems. Academic helicopters are painted black. No, black and green, not only black. They're on camouflage colors also. Fighter jets are light and gray. Light and gray because against the sky you'll get a better. They go. Helicopters fly lower, so black and camouflage colors. They are then camouflaged in the backdrop. That's only. I have already explained why is American ambassador commenting. Yeah. Look, Rabindra, don't use these words that I'm clueless. Then I will never answer your question. That's disrespecting. Let me tell you very clearly. If you think I'm a fool, then you are a fool. Right? If you think I don't know, you don't know then. I would request all of you to weigh what you write and what you speak. ये एरे गेरी चैनल नहीं है. And I am not duty bound to answer you unless you show respect to me. If you don't show respect to me, I will not respect you. Yeah, there is an increasing balance of trade between Russia and India due to crude oil. Why Russians are hesitant to buy? Well, that's something which our external affairs ministry and concerned ministries have to sort out. This is an issue of state policy. They have to do it. One thing where I think we are missing the trick is in spares. A lot of things we are missing the trick. I've been saying this for a long time. I hope someone listens to me. Sir, India focused on Rafale. Is Rafale better than American F-35? See, Sunny, when the Rafale was chosen, it was chosen after extensive set of trials of 4 fighters. Finally, the Eurofighter and Rafale were recommended by the Air Force. The Eurofighter fell away because of other terms and conditions, and we went to Rafale. So this trial was carried out over about 4-5 years. So the Air Force was very clear what it wanted. Now, what is good under a particular set of circumstances might not be good under another set of circumstances. So the Air Force, I leave it to the intelligence and the full system of the Air Force to have gone and zeroed on to Rafale and the Eurofighter. Thank you for your service. If Chinese can defeat us in 62, how and why will it be different? Because China and India both have changed. 62 is when, and today is when? 50 years, 60 years, in fact. We are a stronger nation. And you just have to see, 67, many of us forget. We give China such a bloody nose at Natula, they still remember it. If you read them, they know that is why they are worried. And then you must remember Ladakh. Ladakh, they got a beating, solid beating. More people died in Galwan. Ours was 20. The count is anything from 30 to 40, and they have hidden. And it is normal. The communists hide. You might not believe me if you're a communist. That's okay. So they have hidden, and they've learnt. They tried at Yangtze. Were kicked back. For the first time, the communists had to roll back 9 kilometers in Ladakh
at Pangongso and in Kailash Range after breaking up their own defenses which they had built. If you remember, they had put a map of China on Pangongso, said that this is part of China. They've gone back. Usko mita ke वापस गए. So they will be defeated if they come next. Akash Pratap. My question is, can India make its own collective defense group along with ASEAN countries to counter China by blocking its trade routes? Look, Akash, यहाँ तक बात पहुंची नहीं, क्योंकि एशियन के साथ हमारा संबंध अभी बढ़ रहा है, टाइम लगेगा, और एशियन का जो है संबंध चाइना के साथ बहुत गहरा है, और एशियन के कंट्रीज खासकर के लाओस और कंबोडिया ये चाइना के बहुत निकट हैं, और एशियन के कंट्रीज छोटे हैं, दे आर वरीड. कुछ हद तक ये एशियन कंट्रीज आर ऑलरेडी इन्वॉल्व विद यूएसए. So for us, and we are involved with USA. So in some manner, things are happening. Okay. How can we stop honey trap? Honey trap is a honey trap. I really can't explain to you why. Right. I wanted to know your stand on illegal immigration. Yeah, I've said it's a civil affair. It's the Home Ministry which has to come into action. And it has to stop at the source, wherever it is taking place. There are all kinds of rackets on the border. I mean, people who know will tell you all kinds of smuggling rackets are along the border, on the Bangladesh border and Myanmar border. Even really dogs are smuggled there. I'm not treating with them with kid gloves. You don't know. So I cannot explain more to you. You're not lived with them. Okay. You should understand this mentality of the tribes. If you don't understand the mentality, Lohitnath, आप ऐसे बात करते रहो, आप बोलते रहो, and people like you will spoil the atmosphere. Pankaj Sinha, right? China dictatorship plus democracy plus Buddhism, can it happen in the future? I doubt. Very difficult. Okay, right. I'll take new people only hereafter. Sarika Jain, what do you think about the recent news about US naval base in India? There's no naval base in India. हमारा जैसे पहले में मैंने बताया, I've already answered this question in the initial stages. We have an agreement, logistics agreement with USA. When their ships come here, they victualize. When our ships go to their bases, we victualize, right, and refill and all that. So that will carry on. That it's an agreement which was not concluded now, but long back. And as far as their ship repairs in our yards, it's a commercial agreement. If you can buy their aircraft and use them here, or their aircraft and say Predators and Globemasters and all, and we are paying for it. Similarly, they can use our shipyards and pay and get their ships repaired. Nothing free. Okay. It is for individuals to pursue business opportunity abroad, but isn't it the duty of the government to bat for all classes of businesses? Why only big? I agree with you here completely, Srinivas. We have to give an equal level playing field to everyone. And I think at some level the government is doing it. But at the same time, I understand what you're saying, right? That they're giving it only for big businesses. It shouldn't happen. Yeah, Akash, my first day on your channel. Thank you for your service as well as for such. Yeah, thanks a lot. Please do come back, get your friends over. Right. You'll get absolute knowledge-based facts. Will BRICS be able to de-dollarization, bring their own democracy? Out of question. Out of question. Because the BRICS are completely polarized apart. Even China cannot put yuan as the international reserve currency.
right? So if it cannot do that, there's no de-dollarization. ये सब बात करने के लिए अच्छा होता है, but actually it will not happen. Good evening. Do you think mass media gives more importance to Pakistan while the imminent danger? Completely agree with you, no. मैं तो मेरा रोना यही है. देखिए, I'll give you the best of my videos, which have a lot of content on China. Maybe 1,500 people see it. But the worst of my videos about Pakistan, there'll be 3,000-4,000 views. And the worst of the videos on Pakistan in bigger channels, you will have 1 lakh views also. So somewhere I get the feeling that many of our people are seeing these videos for entertainment. दिल खुश करने के लिए भाई पाकिस्तान को रोते रहो. वो या मरा हुआ मुर्दा है, उसको कितना मारोगे? He cannot, he's a dead horse. Okay, again, A for conspiracy. What is the Indian weapon production? Is it enough for high-level conflict scenarios? Russian and Chinese had weapon production against them. Okay, again, wait for this thing on artillery. I'll explain to you everything. We have enough weapons, don't worry. Okay, I think I've finished most of the questions by most of you, at least one odd. Thanks. We've had a long session. I've been able to put across 2 points to you. My last parting shot. You'll get fact-based, knowledge-based, mature analysis, which is good for this country on my channel. That's why I started this channel. If you want that, you're welcome. If you want entertainment, there are so many other channels. Thanks a lot. Good evening and Jai Hind.